Vote we must. Last time ICA has come out with anywhere voting mechanism. That means even though your address in ICA record is of Ahmedabad, but if you're Mumbai or Kolkata or Delhi on the voting dates, online by just following a simple process in within 5 minutes, you can change your polling center. Kindly note that whenever you change this center, it will change only for voting. इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में कुछ चेंज नहीं होगा. For me, each of your vote is very important. I am contesting for Central Council election. My ballot number is 18. Requesting your first vote, and this is a very small, simple process to change your polling booth. I will say it is a 4-step approach, 4-step change of polling booth. You can log into the website, that is a changebooth.ici.org, or I also created one dedicated portal or website for ICI election, that is chindan.com/ccm. Now 4 steps. Step 1, you have to enter your membership number and date of birth. You will be received OTP. Enter OTP from your mobile. Go to step 2. Select change of polling booth, whether you want to change within region or outside region. Step 3, select state, city and booth where you want to opt for voting. And last step, accept and confirm. These are the 4 simple steps. Let us look at step by step. First step, this is a window which is on changebooth.ici.org, where you have to just enter your membership number, your date of birth, and enter captcha. Once you enter this thing, then on your registered mobile number is what? The number which has been given in your ICI in SSP portal is your registered mobile number. On your registered mobile number, you will be given an OTP. That OTP you have to enter. OTP is valid for 10 minutes. Once you submit and enter OTP, then next is it will be given you shown what is your actual current polling booth address. So your polling booth details will be displayed here. You just look at it, and then below there are 2 options: change of polling booth within regional constituency, and second is change of polling booth outside regional constituency. Within is what? So first understand region. There are 5 regions in ICI. Western region इंक्लूड्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा. अगर आपको वोट जो करना है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के अंदर ही आपका है, जैसे अहमदाबाद में एड्रेस है आपका और बॉम्बे वोट करना है, तो आपका विद इन रीजनल काउंट हो गया. अगर आपका अहमदाबाद में एड्रेस है और आपको दिल्ली में वोटिंग करना है तो इट इज आउटसाइड रीजनल कंस्टिट्यूएंसीज. सो सिलेक्ट द एप्लीकेबल बेस्ड ऑन योर प्रपोज voting booth which you want to get it. So select on within regional constituency or outside. For example, if you click on within constituency, then next step is that you are required to select a state and city. तो कौन से स्टेट में आपका पोलिंग बूथ आपको करना है, महाराष्ट्र है या कर्नाटका है या कौन सा स्टेट है, और वो स्टेट के अंदर आप सिलेक्ट करके देन यू कैन सिलेक्ट द सिटी. Once you confirm on state and city, then next option it will display you all the polling booths in a particular city. अगर आपको विद इन अहमदाबाद भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में आपका पोलिंग बूथ वो HL कॉलेज में है, बट आपको वोट करना है ICI न्यू भवन के अंदर, तो देन ऑल्सो यू कैन चेंज अ बूथ. सो देर आर 3 लोकेशंस इन अहमदाबाद. One is ICI ओल्ड भवन, ICI न्यू भवन, एंड थर्ड इज HL. सो अगर आपको इंटरनल चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो. सो देन यू कैन सिलेक्ट द बूथ नंबर वेयर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलिंग सेंटर्स. सो वंस यू सिलेक्ट बूथ नंबर, लुक एट द एड्रेस बिलो दैट, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सबमिट. वंस यू क्लिक ऑन सबमिट तो एक पॉपअप आएगा जो बोलेगा कि आपका ये था और आपने अभी नया ये किया है. सो इट विल गिव यू दिस इंफॉर्मेशन कि पहले ओल्ड क्या था और नया जो सिलेक्ट किया वो क्या है, वो सही कि नहीं है, कंफर्म करो, एक्सेप्ट और डिक्लाइन. वंस यू फील इट्स ओके, एक्सेप्ट इट. वंस यू क्लिक ऑन एक्सेप्ट, नेक्स्ट विंडो विल अगेन
try to give a second information. That means what? Okay, once you change, thereafter you can't change. राइट सो काइंडली अंडरस्टैंड दैट ये जो ऑप्शन है आपको सिर्फ पर्टिकुलर वन टाइम मिलता है. इवन दो यू चेंज फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, यू कांट कम बैक टू मुंबई टू अहमदाबाद. एक ही बार आपको वो ऑप्शन चेंज का सिलेक्शन मिलेगा. सो वंस यू कंफर्म, देन देयर आफ्टर यू विल बी डिस्प्लेड दैट your allotted polling booth details is this much and your selection will be taken care by office, and you will also receive email from ICI election cell that your request of change has been taken care of, and on or after 22nd November, 22 नवंबर के बाद में जब आप देखोगे नो पोलिंग बूथ में, वहां पे आपको ये एड्रेस मिलेगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये जो चेंज ऑफ पोलिंग बूथ है, that is not available till the election date. It is only available for 15th November, right? So within regional constituency, outside there are two options available, but please ensure that by 15 नवंबर तक आप उसको ये कर लो. 21 नवंबर तक वो ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपको विद इन रीजनल कंस्टिट्यूशन करना है तो. अदरवाइज लेट अस फर्स्ट टारगेट. देखो आज आपका पोलिंग बूथ सही करनी है. टेक डिसीजन टुडे, don't wait for tomorrow. It will not take more than 5 minutes, and change it before it is late, because your vote is very important to me. And this is a one web page, cachintan.com/ccm. On that you can get any and every information about election. Thank you so much, and please forward to all your friends and colleagues who may be interested to know and take this option which is being given by ICI. Thank you.